Exam dost, success ka host, Sainik Navodaya mein topmost. Moving on to the division of decimal numbers. Today we will see the division of a decimal number by a whole number. For dividing a decimal number by a whole number, we will learn two methods. The first method is direct division. Another method is converting the decimal number to decimal fraction. Let us start. Here our number is 39.168, which has 3 decimal places, and we have to divide this by 12. Now you count the number of decimal places and take this number without the decimal point. Without the decimal point, this number will become 39,168. Now let's divide this number by 12. Dividing by 12, it's 12 ones are 12. Dividing by 12, it's 12 threes are 36. Subtraction will give me 3. Take 1 down. 12 twos are 24. Subtracting, I get 7. Let's take the next number, 6 down. 12 6 are 72. Subtracting, I'll get 4. Take the next digit, 8 down. 12 fours are 48. Division is complete. My quotient is 3264. But this is not the answer. Let us now place the decimal point. Now in our original number there were 3 decimal places. So in the final answer also I should have 3 decimal places. And for that, let's count 3 digits from the right side. 1, 4, 2, 6, and the third digit will be 2. Let's place the decimal point. Our final answer will be 3.264. Now let's divide 0.567 by 9. If you want to divide 0.567 by 9, the first step, you count the number of decimal places. In the decimal number 0.567, after the decimal point there are 3 digits. So there are 3 decimal places. And now take this number without the decimal point, it will become 567. Let's divide this number by 9. 9 6 are 54. Subtracting, I get 2. Take the 7 down. 9 3s are 27. Division is complete. My answer is 63. But this is not the final answer. Now we have to make it a 3-digit decimal number, or a decimal number with 3 decimal places. अब इसमें हमें 3 decimal place देने हैं, तो आपको राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करने होंगे. 1 द राइट साइड, 2 अगली डिजिट नहीं तो लेफ्ट में 0 लगाइए, 3 पुट द डेसिमल पॉइंट विल बी 0.063 which can be written as 0.063. Very simple method. Now there are multiple ways of actually solving such questions. This is one of the easy approach. Now look at the next example. You have to divide 2.32 by 16. अब यहाँ पर हमें 2.32 को 16 से डिवाइड करना है. It will be slightly different than the previous divisions. First of all, count the number of decimal places here. Number of decimal places here are 2 decimal places. Now take this number without the decimal point, it will be 232. And now
Now let's divide it by 16. 16 ones are 16. Subtracting, I get 7. I take the 2 down. 16 fours are 64. Subtracting, I get 8. Now 16 will not divide 8, so I have to make 8. I have to convert it into 80. And how will I do that? I'll place a decimal point in the quotient, and against that I'll put a 0 after 8. It will become 80. अब हमें क्या करना है? 8 तो 16 में नहीं डिवाइड होगा, तो हमें 8 को बड़ा करना होगा. बड़ा कैसे करते हैं? 0 लगाकर. 0 कैसे लगेगा? आप क्वोशंट पे डेसिमल पॉइंट लगाइए और 8 के आगे 0 लगाइए. नाउ विल डिवाइड. 16 5 जा 80. Division is complete. My answer is 232 divided by 16 is 14.5. Now you see here that 232 divided by 16 itself, ये एक पहले ही एक डेसिमल नंबर आ गया, और अभी हमें इसमें और एडिशनल 2 डेसिमल प्लेस और देने हैं, क्योंकि ओरिजिनली 2.32 में 2 डेसिमल प्लेस थे, और जब हमने इसका डेसिमल प्लेस हटाकर 232 को 16 से डिवाइड किया तो ऑलरेडी ये एक डेसिमल नंबर आ गया जिसमें 1 डेसिमल प्लेस है. तो अब ये इस 2 डेसिमल प्लेस का क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको इस 1 डेसिमल प्लेस में ऐड कर देना है. मतलब इस नंबर में 14.5 में अभी 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें और 2 डेसिमल प्लेस ऐड करने होंगे. मतलब इस नंबर में टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाने चाहिए. 2 ऑलरेडी नंबर में थे 2.32 में, और 1 हमें डिवाइड करके मिला. दोनों को प्लस कर दीजिए तो टोटल हमें 3 डेसिमल प्लेस देने होंगे. अभी इसमें ऑलरेडी 1 डेसिमल प्लेस है, और इसको और 2 डेसिमल प्लेसेस देने के लिए डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे. 2 डिजिट्स आप लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे. 1 2 डेसिमल पॉइंट हमारा बिगिनिंग में आ जाएगा. ये हो जाएगा 0.145, विच कैन बी रिटन एज 0.145. दैट इज द फाइनल आंसर. यहां पर ये चेंज था कि जब आप डेसिमल पॉइंट हटाकर डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी वो एक डेसिमल नंबर आ रहा है, और उसमें एडिशनल आपको 2 डेसिमल प्लेसेस और देने होंगे. तो 2 और डेसिमल प्लेसेस देने होंगे, मतलब 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस, टोटल 3 डेसिमल प्लेस आने चाहिए. 3 डेसिमल प्लेस मतलब अभी तो ऑलरेडी 1 डेसिमल प्लेस है इसमें, और 2 प्लेसेस हमें इसको देना होगा. मीन्स यू हैव टू काउंट लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट. हमने 4 और 1 काउंट करके यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दिया. हमारा आंसर 0.145 विच इज 0.145, ये हमारा आंसर आया. फाइनल आंसर 0.145. Let us divide 48.38 by 8. Right now 48.38. Count the decimal places. It has 2 decimal places. Now take this number without the decimal place. It will become 4838. Now let's divide it by 8. Dividing by 8, it is 8 6 ja 48. Take 3 down. Now 8 will not go in 3. So what I'll do is, I'll do 8 zeros 0. Subtracting, I get 3 here. Take the 8 down. 8 4s are 32. Subtracting, I get 6. Now 6 will not go in 8, so I'll have to increase this 6. And how can I do that? By placing a 0 here. And for placing this 0, I'll have to put a decimal point in the quotient. Now 8 7s are 56. Subtracting, this is 4. Now in 4, 8 will not go, so I'll have to increase 4. Place a 0 on the right side. And remember, if we have placed the decimal point once, we can place as many 0 as we want, one at a time. 8 5s are 40. My division is complete. My quotient is 604.5.
6.75. Now this answer is already in a decimal number, but remember our original number had 2 decimal places, so I had to give this number another 2 decimal places, and to give this number another 2 decimal places, move the decimal point 2 places to the left. 1, 2. My decimal point will come here. Our answer will be 6.0475. हमें 48.38 को 8 से डिवाइड करना है. 48.38 में आप 2 डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लीजिए और बिना डेसिमल पॉइंट के ये नंबर 4838 मतलब 4838 हो जाता है. जब हमने इस नंबर को 8 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है 604.75. आई विल मेक दिस 4 स्लाइटली क्लियर. तो 4838 को डिवाइड करके ही हमारा आंसर 604.75 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी एक डेसिमल नंबर है. बट रिमेंबर कि हमारे बिगनिंग में ही 2 डेसिमल प्लेसेस थे, इसका मतलब हमें इस नंबर को और 2 डेसिमल प्लेसेस देने हैं, और उसके लिए हमें डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट लेकर जाना पड़ेगा, 2 डिजिट्स लेफ्ट लेकर जाना पड़ेगा. हम काउंट करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट 4, दूसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा. हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6.0475. Method is simple. Don't do any silly error and remember to add these 2 decimal places at the end. भी ध्यान देना. Now let's move ahead and find out how to divide a decimal number by a decimal number. How to divide a decimal number by a decimal number. There are multiple ways of doing it. The easiest one we will discuss first. The first example is 0.018 divided by 0.6. Now in the first step I will convert the decimal number. I'll write decimal number to decimal fraction. 0.018 has 3 decimal places. 0.6 has 1 decimal place. So what I am going to do is I am going to convert 0.018 from a decimal number to decimal fraction, and for that, first of all, write down 0.018 without the decimal point. It will become 0018. And you know 0018 is only 18. And now in the denominator I'll write down 1 first. And since there are 3 decimal places, I'll place 3 zeros on the right side of 1. So my decimal number 0.018 will become decimal fraction 18 upon 1000. You have to be very careful and remember that after 1 you should place 3 zeros. Next, divided by 0.6 without the decimal point. I know it is 1 decimal place, so without the decimal point it will be 06. 06 is 6. Now see, you understand that 066 होता है, but it is my responsibility to explain कि बाद में confuse ना हो कि 066 कैसे बन गया. तो 0.6 पहले 06 है और बाद में वो 6 है, क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं है. Now I am going very basic. So 0.6 will be 06, which will be 6, and since it has 1 decimal place, तो denominator में पहले आप 1 लगाइए, बाद में एक 0 लगाइए. 1 decimal place है, जितने decimal place उतने 1 के बाद 0. Now let us continue with the division. It's very simple. 18 upon 1000. डिवाइड को बनाइए मल्टीप्लाई, उसके बाद वाला फ्रैक्शन कर दीजिए रेसिप्रोकल. 6 upon 10 का रेसिप्रोकल होता है 10 upon 6. ये लिख दीजिए रेसिप्रोकल. नाउ इट इज अ कॉमन प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया. न्यूमरेटर में 18 है, डिनोमिनेटर में 6 है, दोनों को 6 से डिवाइड कर दीजिए. 1 जा 3 जा. यहाँ न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 1000 है. 10 का एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 1000 का एक 0 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास यहाँ पर 3 into 1 बचेगा, विच इज 3. डिनोमिनेटर में 100 into 1 बचेगा, विच इज 100. 3 upon 100. 100 में 2 zeros हैं, तो 3 में हमें 2 न्यूमरेटर में जाना है. राइट साइड से 3 के बाद हमें
डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं तो 2 डेसिमल प्लेस देने हैं, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करिए, पहला 3 हो गया, दूसरा डिजिट नहीं है, 0 लगाइए, काउंट कर लीजिए, डेसिमल पॉइंट दे दीजिए, 3/100 हो गया 0.03, जिसे हम बोल सकते हैं 0.03. So 0.018 divided by 0.6, it will give me the answer as 0.03. Now इसी क्वेश्चन को करने का एक और सिंपल मेथड हो गया, थोड़ा आपके लिए नया है बट मेथड वो इससे भी ज्यादा सिंपल है. मेथड ये है 0.018 I write down in the numerator divided by 0.6 that I write in the denominator. Very simple technique. सबसे पहले काउंट करो न्यूमरेटर में हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस. तो अगर न्यूमरेटर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1 के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 30, ये वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में. अगर न्यूमरेटर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 30 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर का डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाएगा. ये सिर्फ न्यूमरेटर अब 18 रह गया. क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट इसके डेसिमल हटाने के लिए हमने डिनोमिनेटर में 1000 लगा दिया है. और 0.6 जो डिनोमिनेटर उसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, पहले 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 0 लगाओ. तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से और डिनोमिनेटर 0.6 हट रहा है तो वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000. एक बार और देखिए, लुक एट इट वन मोर टाइम. न्यूमरेटर में 0.018 जो कि होता है 18/1000. तो अगर हमें 0.018 का डेसिमल पॉइंट हटाना है तो हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा 1000. और डिनोमिनेटर है इसका 0.6. अगर इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, ये 3 डेसिमल प्लेस था. अच्छा, 0.6 का डेसिमल पॉइंट हटाना है तो आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा 1 के बाद 10 मतलब 10. न्यूमरेटर का डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, 0.018 का डेसिमल पॉइंट हट जाएगा तो वो सिर्फ 18 बचेगा, मल्टीप्लाई 10 होगा. डिनोमिनेटर 0.6 का डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, वो सिर्फ 6 बचेगा और यहां नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आएगा. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ऊपर 3 डेसिमल प्लेस थे तो नीचे क्या आ गया, 1 के बाद 30 वाला नंबर. और नीचे 1 डेसिमल प्लेस था 6 के साथ तो ऊपर क्या लेना होगा, 1 डेसिमल प्लेस था तो 1 के बाद 1 0 लगाई. तो न्यूमरेटर के डेसिमल प्लेसेस हटाने होंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाएगा कौन सा नंबर, 1 के बाद जितने डेसिमल प्लेस उतने 0 लगाने वाला नंबर. और डिनोमिनेटर के डेसिमल प्लेसेस हटाने हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. मेथड को याद रखना बहुत जरूरी है. तो अब ये 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमें 3 मिल जाएगा और 10 और 1000 का ये 0 कैंसिल हो गया. तो ये न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 3, डिनोमिनेटर में 100. 3/100 नीडलेस टू से 0.03 हो जाता है. दिस इज द आंसर. तो मेथड आंसर आपका दोनों केस में सेम आ रहा है. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, पर ये मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है जो एग्जाम में भी काफ़ी यूजफुल है. स्पेशली अगर आप जवाहर नवोदय का एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आप डेसिमल नंबर से फ्रेंडशिप कर लो. आपको एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर, 2 क्वेश्चन आपको जरूर डेसिमल नंबर से आएंगे, प्लस एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का दे दें या परसेंटेज का दे दें, जिसमें और डेसिमल नंबर की वो एप्लीकेशन करा देंगे, या मेंसुरेशन का दे सकते हैं, एरिया पेरीमीटर का दे दें क्वेश्चन, जिसमें तो डेसिमल नंबर्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. खासकर जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हाँ जवाहर नवोदय हमारा फर्स्ट टारगेट है, तो आप डेसिमल नंबर्स आपको भर भर के पूछा जाएगा. सो बी वेरी वेरी कंफर्टेबल और जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने करिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 0.0018 divided by 0.09. Now in the numerator there are 4 decimal places
And if you want to remove these 4 decimal places, you have to multiply the denominator by 1, and after 1, for 4 decimal places you place 4 zeros. It is 10,000. In the denominator there are 2 decimal places, and to remove this 2 decimal place you multiply this in the numerator by 1. After 1 you place 2 zeros for 2 decimal places, so it will become 18 multiplied by 100 upon removing the decimal point of 0.09, it will be only 9 and multiplied by 10,000. Cancel the zeros here, 2 zeros here, 9 ones are 9, 9 twos are 18. Numerator 2 into 1 is 2, denominator is 100. 2 upon 100 is 0.02. Similarly, we can do the third example too. This is 0.196 upon 1.4. Numerator 0.196 has 3 decimal places. So to remove these 3 decimal places, I have to multiply the denominator by 1. After 1, place 3 zeros. In the denominator, 1.4 has 1 decimal place. To remove this, multiply the numerator by 1. After 1, place 1 zero. It will become 196 multiplied by 10 upon 14 multiplied by 1000. 196 divided by 14 is 14. Cancel the 0. In the denominator I am left with 10. 14 upon 100. 2 zeros in the denominator. Count 2 digits. 1, 2. Decimal point will come here. It will be 0.14 or 0.14. Method is simple. This is the easiest approach. However, there are different approaches given in different books. You can use the one which is comfortable for you. All that is I'm saying. Moving on to the word problems based on division of decimal numbers. The question says a bowler took 15 wickets for 321 runs. What is his average score per wicket? Now, since this is a word problem, let us understand that the total runs here are 321 and total wickets taken are 15. The question says what is the average score per wicket? The formula of average score per wicket will be given by total runs upon total wickets taken. Total runs are 321. Total wickets taken are 15. Let's divide them to find out the answer. 321 divided by 15. I'll start 15 twos are 30. Subtracting, I get 2. Take 1 down. 15 ones are 15. Subtraction will give me 6. Now 6 will not be divisible by 15, so I'll have to increase 6. To increase 6, place a 0 on the right side, and this 0 will come when you put a decimal point in the quotient. Now my number becomes 60. In 60, 15 will go 4 times. 15 fours are 60. Our division is complete. Quotient is 21.4. So the average score per wicket is 21.4. It goes without saying that to understand the word problems, be it a fraction, be it a LCM HCF topic, be it a decimal, or whatever upcoming topics like percentage, profit and loss, a key point is you have to develop the comprehension ability to understand such word problems. This one is in the category of an easy question, because all the information is given directly. You have to just
you have to find out the answer. But you should develop a level where you should be able to first understand the language, second frame the equation, third find out the answer, and then choose the right option. This is what our aim is. Answer here is 21.4. A car covers a distance of 108.9 km in 1.8 hours. What is the average speed of the car? Remember, average speed is given by distance upon time. Here, the distance covered by the car is given as 108.9 km, and the time is given as 1.8 hours. So take it in the denominator. Now we have to divide both of them to find out the answer. In the numerator, I have one decimal place. To remove the one decimal place of the numerator, I'll multiply the denominator by 10. Why 10? Because one decimal place, so after 1 place 1 0, it will become 10. In the denominator, again I have one decimal place. To remove that one decimal place, I have to multiply the numerator by 10. It will become 1089 multiplied by 10 upon 18 multiplied by 10. Now as we proceed to divide them, this 10 and 10 gets cancelled. Now understand a very important point. Here the numerator had one decimal place. Denominator also had one decimal place. So when numerator and denominator have same decimal places, remove the decimal point straight away. No need of doing multiply by 10 in the numerator, multiply by 10 in the denominator. When numerator and denominator have same decimal places, remove them. Here both the numerator and denominator has two decimal places, one decimal place each. Remove them. This numerator will become 1089. Denominator will become 18, like what happened here. Numerator became 1089, denominator became 18. So remember this point, when the decimal places of numerator and denominator are equal, remove them and take the numbers without the decimal point. 108.9 will become 1089, 1.8 will become 18. Let's divide them. 1089 divided by 18. Now I know 18 6 ja 108. Take the 9 down. 9 will not, 18 will not go in 9. Do 18 zeros are 0. Subtracting, I get 9. Now again 9 will not be divisible by 18. So what I'll do, I'll increase the 9. To increase 9, place a 0 here. And to place the 0 here, I'll have to put a decimal point in the quotient. And now let's divide. 18 5s are 90. Division is complete. My answer is 60.5. When the distance is in kilometer, time is in hours. Speed will be in kilometer per hour. Final answer. Next question. The cost of 24 toys of same kind is 783.60. Find the cost of each toy. Each toy means we have to find the cost of one toy. Every toy means every one toy. The question says 24 toys will cost us 783.60, and then we have to find the cost of each toy means one toy. Remember, when the cost of more than one quantity is given, जैसे यहाँ पर हमें 24 टॉयज की दी हुई है, मोर देन वन क्वांटिटी की अगर हमें कॉस्ट दी हुई है,
और हमें वन क्वांटिटी पूछी हुई है, यहाँ पर वन टॉय पूछा हुआ है, तो मोर देन वन की वैल्यू अगर दी हुई है और वन की पूछी हुई है, इन दैट केस आई विल डू द डिवीजन. किसको डिवीजन करना है? व्हाट वी विल हैव टू डिवाइड द कॉस्ट ऑफ टोटल टॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉयज. आपको 783.60 और 24 को डिवाइड करना है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय. ईच टॉय मीन्स वन टॉय. लेट अस डिवाइड देम. 783.60 divided by 24. Now 783.60 has two decimal places. Let us take this number without the decimal point. It will be 78360, and now let us divide it by 24. And remember, there are two decimal places that we are going to take care at the end. Let us divide 78360. If you want, हम इसका end वाला 0 हटा भी सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, but I'll still keep it for your easy explanation. 24 से इसे डिवाइड करिए. 24 3s are 72. Subtracting, I get 6. Take the next number 3 down. 24 2s are 48. Subtracting, I get, this is 13 minus 8 5. This is 5 minus 4 1. I take the 6 down. 24 6 ja 144. Subtracting, I get, this is 2, this is 1. I take the 0 down. 24 5s are 120. My division is complete. My answer is 3265. Final step comes where I have to make this a decimal number by giving it two decimal places. To give this number 3265 two decimal places, start from right side, count two digits 1 2, place a decimal point. My answer is 32.65 rupees. So the cost of one toy is 32 rupees and 65 paise. That's our final answer. The total weight of some bags of cement is 1743 kg. If each bag weighs 49.8 kg, how many bags are there? So here the question says some bags. It doesn't say how many, but says some bags. The weight is 1743 kg, and each bag means one bag is 49.8 kg. So here the question will be total weight of all the bags. So all the bags which we have, which are some bags mentioned in the question, which will be all the bags, the weight is 1743 kg. And one bag, each bag means one bag weighs 49.8 kg. So here the question is the weight of more than one bag. All bag means definitely it is more than one bag. The weight of more than one quantity is given and one quantity is asked. So to find out this quantity, we have to divide total weight of all the bag by weight of one bag. So we will get all the bags. So let us divide 1743 and 49.8. For dividing them, 1743 by 49.8. Now remember, our denominator can never be in decimal, and to remove the decimal point of denominator, multiply the numerator by, here in the denominator it is one decimal place, so we multiply it by 1 and after 1 place 1 0.
So this number will actually become 17,430, and now we have to divide it by 49.8, or which will now become 498. Let us do the division here. 17,430 divided by 498. So I'll have to take first 4 digit here. Let us take 498. It is close to 500. This is more than 1500. Let's take it 3 times. 498 3 times. 3 8s are 24. 4 carry 2. 3 9s are 27. Plus 2 29. 9 carry 2. 3 4s are 12. Plus 2 14. This is 1494. Subtracting these two. This is 13 minus 4 9. This is 13 minus 9 4. And this is 7 minus 3, sorry, 6 minus 4, 2. Place a 0. 498. You take it 5 times. 5 times it will be 2490. My division is complete. Our answer is 35. So total how many bags are there? There are total 35 bags. Question was slightly tricky. हमें यहाँ पर सारे bags का total weight 1743 kg दिया था, और each bag मतलब one bag का 49.8 kg दिया था. हमें अगर total number of bags निकालने हैं तो total weight जो हमें दिया है उससे per bag, each bag या one bag का weight divide कर देंगे तो total number of bags हमें मिलेंगे. That is 1743 divided by 49.8. Decimal point हटाया है, numerator में 10 multiply किया है, further division करने से आंसर 35 आया है, which is total number of bags. The product of two decimals is 1.5008. If one of them is 0.56, find the other. So remember, if the product of two decimal number is 1.5008, this is the product of value of the product of two numbers, and one of the number is 0.56. To find the other number, you have to divide the product value, which is 1.5008, by one of the decimal numbers, which is 0.56. Dividing both of them. Now 1.5008 is 15008. Here there are 4 decimal places. So in the denominator, after 1, add 4 zeros, which will be 10,000, divided by 0.56 has 2 decimal places. So remove the decimal point, it will be 56. And in the denominator, after 1, write 2 zeros. Now let's go by the normal process. This is 15,008 upon 10,000. Convert the division to multiplication, and the fraction after that convert it to reciprocal. It's 100 upon 56. Now cancel the 2 zeros of 100, 2 zeros of 10,000. Let us divide 15,008 by 56. I will do it here. I'll divide it by 56. Now 56 2 times is 112. Subtracting, this is 8. This is 4 minus 1, 338. Take the 0 down. Now take 56 6 times. This will be 336. Let us subtract 380 and 336. This is 10 minus 6, 4. This is 7 minus 3, 4. 3 minus 3, 0. No need of writing. Let's take the 8 down. Now 56. Take 8 times. It is 448. My division is complete. So when I divide 56 and 15,008, I get 268 in the numerator,
and in denominator I have 100, so 268 upon 100. Denominator has 2 zeros. Go to the numerator, from right side count 2 digits, 1 2, put a decimal point. My answer is 2.68. so the other decimal number is 2.68. That's our final answer.